Hello. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Okay. So what I'll do is I'll start with some facts and formulas, which we can copy down, and then we'll come to the question. Any fact which is there, which can come as a question, that we'll discuss again in detail. So I'm just taking it all the formulas and facts related to nth term and sum of n terms. So first I'm taking it with nth term. Nth term. So nth term formula we all are aware of. First formula is Tn is equals to a plus n minus 1 into t. Any other fact or formula you are aware, please let's discuss. Anyone? Hanji bhai, koi aur formula? We can say that the common difference d is nothing but Tn minus 1. What else? No one, no one. Sir, we can also say Tn is equal to L minus n minus 1d. Tn is equals to L minus n minus 1 d. ये फॉर्मूला तो हमने नहीं किया, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता. सही मैं ये जो मैं रिवाइज करता था आपके जो आपने शेयर किया था रिवीजन नोट्स तब पढ़ा था. तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. कौन बताएगा भाई क्या गड़बड़ है? Sir, n plus 1d. Term from last. हाँ, this is nth term from last, you can say, है ना? nth term from last term. और आप nth term from last term बोलते हैं तो फिर वो tn उसको बोलना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. ठीक है? So you don't say tn is equal to this. You will say nth term from the last term. That is, we will take it as this. ठीक है? Where d is common difference from the beginning, you know. हाँ जी. Abhiraj, you are saying something? Any other? Pratna is saying कि sir Tn is also equals to Sn minus 1. Very good. Anything else? Okay. In case of an AP, Tn general form is
an plus b, ये tn की जनरल फॉर्म है. दैट इज ap में जो nth टर्म है दैट इज योर लीनियर एक्सप्रेशन. ठीक है. अगर मैंने nth टर्म को बोला, इफ आई एम सेइंग tn इज इक्वल्स टू 5n square plus 3, then this is for sure not AP. ठीक है ना. Sixth, if you have to take 3 terms, you will take them as a minus d, a plus d, where a minus d is first term, not a. A is not the first term, and d is common difference. If you have to take 4 terms, you will take them as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. So where you will say that the first term is a minus 3d, common difference is 2d. 8th, okay, if a constant is added or subtracted in each term, the result is still in AP with common difference. Let's say अगर मैंने सभी में बेटा 555 ऐड कर दिया है तो कॉमन डिफरेंस पहले d था तो अब कितना होगा, चैट बॉक्स में टाइप करो फटाफट. एक एपी थी जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है d था, मैंने सभी में 5555 ऐड कर दिया. व्हाट विल बी द न्यू कॉमन डिफरेंस? जो नई सीरीज बनेगी वो भी एपी में होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 5 4 3 2 1. Okay, if you are adding a constant term in an AP, the resultant is also an AP with no change in common difference, है ना. common difference remains same. common difference will not be d plus 5. शौर्य ठीक है बेटा, remain मैंने बाद में डी कर दिया था. हाँ जी हाँ जी. है ना, यहाँ पर we'll take if each 1 minute, no. Okay, if each term of an AP is multiplied by a constant k, ठीक है, multiplied or divided by a constant k where k is not equals to 0, then result is an AP with common difference equals to k times of t. ठीक है, हमारे पास बेटा nth टर्म n है. n is nothing but a plus n minus 1 into d. So अगर मैं k टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k टाइम्स ऑफ tn is k टाइम्स ऑफ a plus n minus 1 into k times of d. This is what is saying that the common difference will become kd
and the first term will become Ka. You know, this will be my T1 and this will be my common difference. और यहाँ पर ब्रैकेट में ले सकते हैं और d by k, है ना, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो d by k हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k into d. डन. यस सर. ओके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर आपने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था कि द nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1. सर इसको एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई 10th टर्म क्या है सीरीज की, तो आप कहोगे कि सर पहली 10 टर्म्स को आप ऐड करें, है ना, और उसमें से पहली 9 टर्म्स का सम जो है वो आप माइनस कर दें. This is what is S10, this is what is S9, and this is what is T10. ओके सर, थैंक यू सर. Okay, if nth term is equals to m and mth term is equals to n, then t m plus n is equals to 0. Okay, so what here it's saying is if 10th term is 100 and 100th term is 10, then 110th term will be 0. So AP में प्रूविंग में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन होता है जहां पे आपकी दो इक्वेशन बनेंगी और दो इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, दो वेरिएबल्स होंगे, उनको सॉल्व करेंगे एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. और एक होता है प्रूविंग जहां पर आपकी सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी है. आप समझ रहे हैं, यहां पर आपकी कितनी इक्वेशन बन रही है बेटा? दो इक्वेशन बन रही हैं, तो कोई इश्यू नहीं है ना. दो वेरिएबल्स आएंगे आपके ए और डी की फॉर्म में, वो दो वेरिएबल्स आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप उनको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए, यू विल गेट वैल्यू ऑफ डी, and that value of a and d you will put in this equation and you will get your value of 0 here. Agreed on this? Sir, can you please repeat? Hanji, I am saying proving में beta there are two type of questions are there in nth term. One is where you will get two equations, है ना, two equations will give you two variables, है ना. यहाँ पर equation देखते हैं क्या बनेगी आपकी, a plus n minus 1 into d is equals to m. Second equation is a plus m minus 1 into d is equals to n. And यहाँ से आपको proof क्या करना है? Basically you have to find what is a plus m plus n minus 1 into d. This is what you have to find. Agreed? Yes sir. तो ये कौन सा क्वेश्चन है जहाँ टू इक्वेशंस हैं एंड टू इक्वेशन मींस यू हैव टू वेरिएबल्स, दैट्स इट. आप a और d की वैल्यू फाइंड करें और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर डालें. व्हेन यू विल पुट इट देयर यू विल गेट योर आंसर एज 0. ओके सर. ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं. टू वेरिएबल्स हैं, कैसे सॉल्व करें? सब्ट्रैक्ट कर दें हम इसको. यस सर. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट इज वी आर गेटिंग इज n minus m into d is equals to m minus n. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, a से a कैंसिल हो गया है, माइनस डी एंड माइनस डी आर गेटिंग कैंसिल डाउन, सो लेफ्ट इज n minus m. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज d is equals to negative of 1. ठीक है, ये वैल्यू हम ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज a प्लस नेगेटिव ऑफ 1, सो दैट मीन्स a minus n plus 1 is equals to m, or a is equals to m minus
plus n minus 1. Now these values you will put here. So we are getting Tm plus n is equals to a plus m plus n minus 1 into d. So this is m plus n minus 1 plus m plus n minus 1 into negative of 1. Right? These are getting cancelled. Your answer is 0. तो what I was saying is कि प्रूविंग से रिलेटेड दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं बस. एक क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग के जहां पर दो इक्वेशन बनेंगी आपकी. नॉट ओनली प्रूविंग, आगे जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे ऑल द क्वेश्चंस गोज इन दिस सेम वे, है ना. क्वेश्चंस किस फॉर्म में होंगे? ऑल द क्वेश्चंस जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे. सो यू विल हैव 95% of questions where you will form two equation in two variable, and 5% of the questions are where you will have only one equation with two variables. So from here you can get only a specific answer. इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बहुत ही स्पेसिफिक आंसर फाइंड कर सकते हैं. जनरल आंसर कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना. जैसे क्वेश्चन होगा T19 is 100, है ना. फाइंड T37 और फाइंड S37. अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें टू वेरिएबल्स हैं. ओनली वन इक्वेशन यू आर फॉर्मिंग विद टू वेरिएबल्स, एंड उससे आप जो है सॉल्व कर रहे हैं. So this is this type of question where you get only one equation in two variables. ये आपको कैटेगरी समझ में आई, how they are different? Yes, sir. ठीक है. सो हर क्वेश्चन में we'll just see it कि ना कितनी इक्वेशन बन रही है and how to solve that. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत ही या तो प्रूविंग में आता है या फिर फॉर्म में आता है, वर्ड फॉर्म में, है ना. क्वेश्चन इज इफ T10 is 100, T100 is 10, find T110, है ना. इस टाइप में क्वेश्चन हो जाएगा आपका. ठीक है जी. 11th, if p times of n times of nth term is equals to m times of mth term, then Tm plus n is equals to 0. अब ये क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आएगा? If 10 times of 10th term is equals to 20 times of 20th term, find 30th term. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब यहाँ पर कितनी इक्वेशन बन रही है हमारी? दोनों साइड 2. Where are two equations भाई? एक ही तो इक्वेशन बनी, इक्वालिटी साइन जहां आया तो वहां पर एक इक्वेशन बन गई, और ये तो आपको फाइंड करना है. Yes, sir. So this is a question where you have got only one equation is there, है ना. अब इस इक्वेशन में जैसे अगर ये वाली इक्वेशन की हम बात करें बेटा, तो दिस इज व्हाट इट्स गिविंग मी 10 टाइम्स ऑफ a plus 10 minus 1 into d is equals to 20 times of a plus 19d. चेक करें. Can you get value of a? No. Can you get value of d? No. We cannot ऐसे find. खुद कट के सीधे T30 आएगा A प्लस. हाँ, तो that's what I'm saying. This is that second type of question. यहाँ पर अगर मुझे एग्जामिनर पूछेगा T31, I don't know. T32, I don't know. We cannot find, data insufficient. T30, that very specific term, yes, that we can find. ठीक है. So here how you have to proceed is you first check out what exactly you have to find, है ना. I have to find
T30, that means I have to find A plus 29D. I have to find A plus 29D. I don't have to find A. I don't need to find D. Specifically A plus 29D is what I have to find. Try to achieve here. So this is 0, 0 getting cancelled. So everything I'm switching on the right side. So 2A minus A is your A. And 38D minus 9D is 29D. And this value is coming as 0. Right, understood? So यहाँ पे जो है, this becomes your same question, becomes your proving question. So you'll say n times of A plus n minus 1 into D is m times of A plus m minus 1 into D. So this is your n A minus ma plus n times of n minus 1D minus m times of m minus 1D is equals to 0. So this is n minus m times A plus n minus m times n minus 1 into D is 0. ठीक है, यहाँ पर ऊपर मैंने इन दोनों टर्म्स को कॉमन लिया. अप मिस्टेक कर दी हमने. ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो दिस इज बिकमिंग योर n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m into D is 0. So this n minus 1m into A plus n square minus m square. So that is n minus m, n plus m, n minus m into D. This is 0. So here n minus m is coming out common. Left hand side is A plus n plus m minus 1 into D is 0. N is not equals to m, therefore A plus n plus m minus 1D is 0, or T n plus m is 0. Done? Yes, sir. Next. If nth term is 1 by n or 1 by m, and mth term is 1 by n, then m plus nth term is 0. Sorry, m plus nth term is 1. And here this is not m plus n, m nth term is 1. Okay, so question here it will be, question is, if 10th term is 1 by 20, 20th term is 1 by 10, then find 200th term. आंसर कितना होगा ये? 1. Approach two equations. You will have two variables. Variables कौन से? A and D. Two equation, two variables. Solve it to get value of A. Solve it to get value of D. And then you put it here and you'll get your answer. Right? Solve कर सकते हैं सभी? Yes, sir.
Anyone interested in the solution, just let me know. I have to just write down few lines and it will be solved. Otherwise, this is same approach is there. Okay, someone is saying sir आप MN term में आप इसको solve कर दें, तो इस form में हम इसको solve कर लेते हैं. So this will be a plus, or any question which Sanjukta ma'am has already done, please let me know. Then I will skip that. And then you have got a plus m minus 1 into d. This is 1 by n. आप इसको subtract करेंगे, so you will get n minus m into d is 1 by m minus 1 by n, which is n minus m upon mn, and d is coming as 1 upon mn. Okay, this value will put on top, so you will get a plus, this is value of d, a plus n minus 1 into 1 by mn is equals to 1 by m. So a is 1 by m minus n minus 1 upon mn. So this becomes 1 by mn. This comes your value of a. A और D आ गया आपके पास. So you will say Tmn is equals to a plus mn minus 1 into d, which is 1 by mn plus mn minus 1 into 1 by mn. So this is mn in denominator, 1 plus mn minus 1, which is 1. Done. Yes, sir. Okay. SN के formulas कौन से हैं आपके? 12, 13. So your SN is n by n 2, by 2 a plus n minus 1. 2a plus n minus 1 into d. और बताओ? Sir, n by 2 a plus l या a plus t है. और बताओ? a n by 2 a plus n minus 1. ना वो तो सेम आ जाएगा ऊपर वाला. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. दिस इज n टाइम्स ऑफ a plus l by 2. है ना, 2 को शिफ्ट कर दिया मैंने n की जगह a plus l के नीचे. Sir, n into t middle. हाँ जी. Sn is in form of an square plus bn. ठीक है, that is quadratic expression without constant term. So यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ सकता है
find T10 if Sn is equals to 4n square plus n. कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका एक AP बनेगी, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है विदाउट कांस्टेंट टर्म, सो इट विल फॉर्म एन AP. सो AP के लिए यू विल फर्स्ट फाइंड T1. So your T1 is equals to same as S1, which is equals to 5. Then goes your S2. S2 कितना है बेटा आपका? S2 is 4 times of 2 square plus 2. So this is your 16 plus 2 is 18. And when I'm saying S2, S2 is also equals to T1 plus T2, but T1 is 5. So therefore T2 is 13. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ S3 भी एक बार फाइंड करके देख लेते हैं AP बन रही है हमारी या नहीं. तो S3 is 4 times of 3 square, that is 9 plus 3, right? So this is your 39, and this 39 is equals to T1 plus T2 plus T3. तो सॉल्व करेंगे, your T3 is coming as 21. तो आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी बेटा? सीक्वेंस is 5, 13, 21 and so on. है ना, इसमें आप T10 फाइंड कर सकते हैं. एंड अदर वे ऑफ सॉल्विंग इज, जो हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला क्या था हमारा? T10 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S9. अब ये फॉर्मूला आप यूज कब करेंगे? जब AP होगी सिर्फ. नहीं, ये तो वैसे जनरल किसी भी उसमें आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो बोथ वे यू कैन प्रोसीड ऑन दिस. बट ये आपको पता होना चाहिए ना, AP कब होगी? जब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा विदाउट कांस्टेंट टर्म. तो जो सीक्वेंस बनेगी दैट विल बी ऑफ AP. डन. 15th. If Sn is equals to M, Sm is equals to N, then S of M plus N is equals to minus M plus N. तो यहां पर आपकी एक इक्वेशन है या दो इक्वेशन है? टू इक्वेशन. टू इक्वेशन है ना. तो सिंपल टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, कौन से? A एंड D. आप A की वैल्यू फाइंड करेंगे, D की फाइंड करेंगे, एंड देन यू कैन फाइंड फॉर Sm plus N. है ना, इजी है ये वाला तो. यस सर. If I am saying if Sp is equals to Sq, then S of P plus Q is 0. You know, or if I am saying S of 10, sum of first 10 terms is equals to sum of first 20 terms, then sum of first 30 terms is 0. यहाँ पर कितनी इक्वेशन है? वन इक्वेशन. तो ये बहुत ही स्पेसिफिक आंसर है यहाँ पर. S31 या S29 we cannot find. Following this part. तो यहाँ पर जो फाइंड करना है पहले उसको देख लेते हैं. हमें फाइंड क्या करना है? S30 is nothing but n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, है ना. तो आपको A और D नहीं फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड 2a plus 29d. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और वो यहाँ से फाइंड करनी है आपको. तो हियर यू आर गेटिंग इज 10 by 2 into 2a plus n minus 1d is equals to 20 by 2 into 2a plus 19d. Okay, so this becomes your 10a. 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड. So what I'm getting here is 20a
20A plus 90D is equals to 40A plus 180D. दोनों एक साइड ले जाते हैं. So I am getting 20A plus 90D is equals to 0. कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम. सर आई थिंक RHS तो वो 20A होगा सर. 20A क्यों? हमने 2 से 2 तो कैंसिल कर ही दिया था. ओके ओके सर. यहाँ पर मिस्टेक की ना हमने. 180 लिखा, वो 380 था. This becomes 290D. Or what I'm getting is 2A plus 29D is equals to 0. Okay. So this value you will put in S31. So this I'll take as 1. Now I'll say S30 is equals to 30 by 2 into 2A plus 29D. This is 30 by 2 into 0 from 1. Therefore, S30 is equals to 0. ये हमारा रफ वर्क था which I'm deleting. ठीक है जी, डन. यस सर. Let's take few questions. For 2 AP, Sn upon H dash n is 2n plus 1 upon n plus 4. Find ratio of their 10th term. टू AP है, उनके सम की रेशियोज जो है वो गिवन है आपको, है ना. आपको nth 10th टर्म की रेशियोज निकालनी है. आई एम रिपीटिंग अगेन. इफ एनी क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी डन विद संयुक्ता मैम, लेट मी नो. Raise your hand how we can solve this question. Nope.
दो वेज में है ना, 2 ways आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। हाँ जी मौली, आप बताओ बेटा, मौली मुंद्रा। तो पहले हम इसमें से लाइक n की वैल्यू डाल सकते हैं, लाइक n1 और n2 तो ऐसे करके। बेटा उसमें लेकिन मेरे पास रेशियोज आ रही हैं, मेरे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आप समझे। S1 इज नॉट 3 और S-1 इज नॉट 5, रेशियो इज 3/5। एक्चुअल हो सकता है S1 इज 6 एंड S-1 इज 10, फिर रेशियो ली तो हमने, फिर वो 3/5 आ गई। So what are those two APs? Sorry, data is insufficient. We cannot find those two APs. Shall I take it? So two ways I'm going to solve it. One is if it comes in exam. ठीक है, ये एक्चुअल सीबीएसई का क्वेश्चन है बट वे बैक है ना, 2012 आई थिंक और 2013। सो ये जो आपका SN है, SN अपॉन H-n, तो SN इज नथिंग बट n/2 2a plus n-1 into d upon this is n/2 2a dash plus n-1 d dash, है ना। दो अलग अलग सीरीज है, फर्स्ट टर्म भी अलग होगी, कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा। चेक करो यहाँ तक कोई इश्यूज तो नहीं है। क्या करें, n/2 कैंसिल कर दें और यस पूरी सर। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैं n/2 कैंसिल कर रहा हूँ और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा न्यूमरेटर में, a plus n-1/2 into d upon a dash plus n-1/2 into d dash. Agreed on this? यस सर। This is given as equals to 2n plus 1 upon n plus 4, है ना, ये given है ना, ये इसके इक्वल है। Now think on it, हमें क्या फाइंड करना है, to find हमें फाइंड करना है t10 अपॉन t-10 और a प्लस 9d अपॉन a डैश प्लस 9d डैश। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है इसको आप क्या बनाना चाह रहे हैं, 9। ठीक है, नाउ टेकिंग n-1/2 इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू 19। n को अगर आप 19 लेंगे, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज a प्लस 19 minus 1/2 into d upon a plus a dash upon 19 minus 1/2 into d dash. This is 2 into 19 plus 1 upon 19 plus 4. So this is what I am getting is t10 upon t dash 10 is nothing but 39 upon 23. और इसका बिल्कुल सिंपल वन लाइन का वर्जन पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना बेटा, है ना। और अदर वे ऑफ सॉल्विंग, SN का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ठीक है। मैं इसमें राइटिंग के वे में नहीं बता रहा हूँ बट अदरवाइज हाउ टू सॉल्व इट है ना, वो वे ले लेते हैं हम। आप मुझे बेटा एक चीज बताओ, अगर मिडल टर्म जो है आपकी लेट्स से 40 है, तो सीरीज में कितनी टर्म्स है टोटल, हाँ जी क्या हो गया भाई क्लास, एपी के सीरीज में मिडल टर्म इज 40, टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर,
sorry, not middle term is 40. 40th term is middle term. Then how many terms are there? In an AP, 40th term is middle term. How many terms are there? Chat box में लिखो फटाफट. 118, 70, 80. शौर्य माइक पर आओ बेटा. बेटा अगर T40 मिडल टर्म है तो T40 से पहले कितनी टर्म्स हैं ये बताओ. 40 टर्म्स होंगे. 39 टर्म्स होंगी ना. 40th टर्म तो मिडल हाँ. टर्म है और इसके बाद भी 39 टर्म्स होंगी, तभी तो ये मिडल टर्म होगी, यस. है ना. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपकी? 79. 79. 79. ठीक है. सेम वे में अगर मैं कह रहा हूं कि 10th टर्म जो है वो मिडल टर्म है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? इससे पहले 9 टर्म्स हैं, इसके बाद 9 टर्म्स हैं. टोटल टर्म्स विल बी 19. ठीक है. अब आपको याद है मैंने बताया था Sn कितना होता है? n टाइम्स ऑफ t मिडल. ठीक है. कैन आई से S19 इज 19 टाइम्स ऑफ t डैश 10. बोल सकता हूं मैं T10. Yes, sir. H डैश 19 कितना होगा? 19 टाइम्स ऑफ t डैश 10. ठीक है. अब इसकी अगर आप रेशियो देखोगे तो व्हाट आई एम गेटिंग इज T10 अपॉन t डैश 10 जो मुझे निकालना था. दिस इज S19 अपॉन H डैश 19 विच इज आपका जो फॉर्मूला था. सो 2 इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 19 प्लस 4. ठीक है जी. डन. Yes, sir. ओके. If for a non-zero AP, non-zero AP means अगर मैंने सारी टर्म 0 0 ले ली तो वो भी एक AP है. तो फॉर अ नॉन जीरो AP मतलब सारी टर्म्स जो है उसकी 0 नहीं है. ठीक है. योर T19 is equals to 0. Find T49 upon T29. नहीं, यहां पर ये क्वेश्चन क्या है आप देखोगे तो एक ही इक्वेशन गिवन है आपको एंड उसी से आपको आंसर फाइंड करना है ना. तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा. तो बेसिकली पहले आप डिकोड कर लो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है. इन्फॉर्मेशन तो सिंपल वे में हमें गिवन है a प्लस 18d इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू डोंट नो, d की आई डोंट नो. a प्लस 18d इसी को ही यूज करना है आपको बस. ठीक है. और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है T49 बाय T29.
or you have to find basically a plus 48d upon a plus 28d. अब बताएं कैसे करेंगे. Anyone? सर एक सेकंड. मेरा आंसर ठीक है. हाँ जी, वेरी गुड. शौर्य करेक्ट, प्रार्थना करेक्ट. दक्ष करेक्ट. ठीक है जी, देख लेते हैं. बहुत ही इजी और सिंपल था. हाँ जी, गर्व करेक्ट. Basically what you have to do is you will here from here you will take a is equals to negative 18d and this value you will put here. So you are getting t49 upon t29 is equals to negative 18d plus 48d upon negative 18d plus 28d. So this is 30d upon 10d or 3:1. ठीक है ना. एक ऊपर हम जो फैक्ट लिखना भूल गए दैट इज t1 plus tn is second term plus second last term is equals to third term plus third last term. ठीक है ना. बेसिकली यहां से यहां जाने पर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं और यहां से यहां जाने पर हम कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सम विल रिमेन सेम. So you can say in an AP sum of two terms equidistant from each end remains constant. ठीक है. और अदरवाइज ऑल्सो इफ आई से लेट्स से मैंने आपसे बोला T4 1 second. So if I'm saying T4 plus T20 है ना,
आप यहाँ से 2 टर्म्स आगे जंप कर जाएं तो यहाँ से 2 टर्म्स आपको पीछे जंप करना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू T6 प्लस T18. अगर आप यहाँ 3 टर्म्स आगे जंप कर रहे हैं तो दूसरे वाले में 3 टर्म्स पीछे जंप कर जाएं, प्लस T15. क्वेश्चन. If A1 plus A7 plus A16 is equals to 40, find S15. हाँ जी, फटाफट बताएं फर्स्ट अप्रोच क्या होगी हमारी. एक ही इक्वेशन बन रही है ना ए और डी में, दो इक्वेशन तो है नहीं कि अलग अलग ए और डी फाइंड कर लें. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या चाहिए S15 के लिए. S15 is 15/2 into 2a plus n minus 1d, है ना. तो आपको बेसिकली दिस इज 15 टाइम्स ऑफ a plus 7d. आपको a plus 7d चाहिए. जब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रॉम देयर यू विल गेट a plus 7d. यू विल नॉट लुक फॉरवर्ड फॉर a और d सेपरेटली, है ना. a plus 7d के लिए हम जाएंगे. So this becomes a plus 6d plus a plus 15d is 40, right? So this is 3a plus 21d is 40 and a plus 7d is 40/3. This value you will put here. So this S15 is 15 times of 40/3. So this is 200. ठीक है जी. Yes, sir. इसी को अगर आप थोड़ा सा फास्टर अप्रोच में देखना चाहें, है ना, तो इसी को आप कह सकते हैं सर A1 प्लस A7 प्लस A16 इज 40. अगर मैं एक टर्म इसको आगे जंप करा दूं A8 और इसको एक टर्म पीछे जंप करा दूं A15, दिस इज 40. Sum of extreme terms a plus l, this is equals to 2 times of t middle. ये कहां से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है ना. T1 plus Tn is T2 plus Tn minus 1. और ऐसे करके अगर आप बीच में जाएंगे तो 2 times of t middle के इक्वल हो जाएगा, है ना. So this is A8 plus 3 times of A8 is 40. Sorry, 2 times. A8 is 40/3 and S15 is 15 times of T middle. So 15 times of 40/3 or 200. I'll say आप first method पे stick करें, वो ज़्यादा अच्छा है ना. This is what you will stick with. One question for homework. You'll post the solution on the group. So question is 5 terms in AP. If sum of those 5 terms is 25, product of these 5 terms, this is 2520, and one of the term is minus 1/2. Find the smallest term.
ठीक है ना? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टेस्ट रहेगा संडे को, एंड दैट टेस्ट विल बी MCQ टेस्ट विल बी देयर with 100 or 120 questions will be there. Can you repeat? आई एम सेइंग संडे का टेस्ट जो है वो आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा MCQ. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टेस्ट. सर सोक्रेटिव पे नहीं, आप बोलेंगे तो मैं सोक्रेटिव पर डलवा सकता हूँ, बट आई डोंट लाइक इट ऑन सोक्रेटिव. OMR आपको अगर OMR भरने में इशू है तो आई हैव सजेस्टेड बिफोर, आप जाएं स्टेशनरी से 15 रुपीज का व्हाइट बोर्ड मार्कर खरीदें और उसको यूज करें OMR भरने में, है ना? सिर्फ सिंपल डॉट टच करेंगे तो अपने आप पूरा सर्कल भर जाता है उसमें. ये गेटिंग माय पॉइंट है ना? जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है उसकी टिप जो है वो मोटी होती है ना, उससे फटाफट भर जाती है OMR. रेज योर हैंड इफ यू वांट इट ऑन सोक्रेटिव. अगर आपको टेस्ट सोक्रेटिव पर चाहिए तो आई विल पोस्ट इट ऑन सोक्रेटिव देन. रेज योर हैंड. 1 2 3 4. Only 4. Okay, so I will make it on paper pen, and a few of you like it on paper pen. Take a printout and then solve it and then fill the OMR. चलो जी, let's have a break and we'll start science. Science की क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगी बेटा, है ना? 5:15 पे will start and we'll keep it till 6:15 or 6:30. So I'm Okay, logging sir. out presently and you have to log in again at 5:15. Okay, sir. चलो जी, okay, bye bye. Bye, sir.